थे the nature of Dogra rule, which is topic second of unit third. और इस nature of Dogra rule में we have categorized Dogra rule into three, or it can be defined in three ways. I said it was autocratic, despotic. Secondly, it was a sectarian state. And thirdly, I said that it can be called as a feudal state in many ways. तो आज हम इसी तीसरी कैटेगरी पर डिस्कस करेंगे that how this Dogra rule can be called as a feudal rule. What justifications are there? What examples are there by which we can label it as a feudal rule? Now, if you look at this term first of all, feudal, or feudalism, असल में this feudalism term has been derived from a Latin word, feudum, and if it is translated into English, it means fief. And if fief is explained, what fief is, it means a piece of land. In that sense, अगर we show this, the feudalism is a very broad system. It can be political, economic, social and cultural system in which everything revolves around land. Our measure fief was wrong. The word feudalism has been derived from feudum and it means fief, or feud, it means fief. Fief means land, a piece of land. So everything here revolves around the land. If you look at it as a political concept, it revolves around land. If you look at it as an economic concept, it revolves around land. Land is the main point. If you look at it as a social system, it revolves around the land. So everything since it revolves around the land, if such a system is prevalent in any society, that society can be called as a feudal society. Now with regard to Dogra rule, how it can be categorized or why it can be called as a feudal rule. So if you look at feudalism again, in feudalism there are some relations. After Zakal feudalism it involves actually two groups of people. I can say it involves a relation between two. One is the landlord, the owner of the land, king, and the second are those who get the land from the king. आगे सज्जमा था ये मतलब land third king nation. Byago king itself. तो असल में ये दो कैटेगरीज के लोग हैं. One is the owner of the land, is the जमीन owner, और दूसरी वो कैटेगरी है जो ओनर से जमीन लेते हैं. The owner gives them land. और ये लैंड ना हम ये थोड़ा टुकड़ा नहीं होता है. It's not just one canal, two canal or three canals of land. It can be 100 canals of land. We landlord, the king chosen invariably, he gives land to his subordinates,
पास सारी जमीन थी, अब जिसने लैंड दे दी, जिसने ले ली, ही इज द वासल। वासल, VASSAL। मगर चूंकि अमिस वसलस वारिया जमीन, it can be 100 canals, it can be 1000 canals, so ये वसल हेकान ये सारी जमीन पान थी, it divides it among money, ये बेदहन से डिवाइड कर। अब ये पास ऑन करता है जमीन, वंची ये करन पास ऑन जमीन, ये जो नहीं सपोज दहन नफरन पानी जमीन जो दहन मज बांट, तो ये चेन जो है वो खींचती चली जाती है। अब ये बनता है लॉर्ड, बाकी जो 10 से लेते हैं वो बनती है वसल। लास्ट में ये जो जमीन है वो एक सर्फ के पास, सर्फ वो शख्स यमिस जमीन मज का राइट लास्ट तक ये जमीन पहुंचती है उस शख्स के पास जो कल्टीवेट करता है, बट ही हैज नो राइट इन द लैंड। जमीन का राइट ही he is just a tenant, शख्स सिर्फ कल्टीवेटर, and he can be thrown at any time out of this land। और भाई शख्स ने tied to land, यानी जमींदार दिया लगे, अगर कोई साथ फिर ना करने कल्टीवेट किया, बट जमींदार जो है has absolute right over this surface, and he doesn't leave him despite the fact that the cultivator or the tenant is willing to leave। इसमें बनिया रहा करहा ने कल्टीवेट, मैं पास डाट रही है, मैं पास खसा रही है, तो करहा ने जमीन कल्टीवेट किया, मगर मिशन लैंडलॉर्ड कराउंड गया, Uchman, he is tied to land, which means bring this jacket. Uchman feudalism, that's what we call it, feudalism, a system of feudalism। वो मैं तो सिंपल समझ क्या मैं चाह हायरार्की आ, अब मैं चाह सीडी आ, ताकि जो लॉर्ड, पच सबऑर्डिनेट लॉर्ड, पच वासल, पच सर्विस। अगर ऐसी apply करो डोगरा regimes, how we can say that Dogra rule was in many ways more a feudal rule? There are a number of examples by which this rule can be labeled as a feudal rule. Firstly, अगर आप 1846 से देखोगे, if you see the timeline from 1846 till the end of the 19th century, यानी 1900 onwards, land was the most important thing in the entire state of Jammu and Kashmir। देखो अहम चीज रोज देखिए सोच जमीन। The state derived large amount of revenue from land। सीधा सा हमारी क्या revenue जमीन पर है। इसका feature of feudalism। Most of the income or most of the people they subsist on land। बेहतर लक्ष्य आसन जमीन पर ही दारमदार करना feudalism। And that was true of the state of Jammu and Kashmir। Many of the people were directly or indirectly engaged in land, and in fact the state also derived huge amount of revenue from the land in the form of land revenue। So Isha category is one of the feudal rule। दूसरी चीज, if you see the Jammu and Kashmir, it was, there were many jagirs। Jagir को यो है, Jagir is an estate। Jagir on base and किशना हम ज़िक्नाल, सोल कनाल क्या? It can be hundreds and thousands of canal, which the ruler bestows upon his trustee। नीचे किस वफादार इंसान करन हवाल जागीर, और ये सारी जागीर करन हवाल, जिस
जितनी पोजेस करनी जमीन जिसको रूलर देता है, दिस जागीरदार एंजॉयज सेवरल पावर, वारिया पावर आते, he is having administrative powers, अमिश तस इलाकस पर हुकूमत करनुक ते हक आसन, रूल चलानुक हक ते आसन, यह अमिश जागीर छु, ये सोरे इलाक छु आसन जागीर मुंद। So he is having administrative right over that jagir. Secondly, he is having fiscal right. FISCAL. Fiscal means tax collection right. Tax imposition right. ये tax impose कर, ये tax collect कर। And thirdly, he is having judicial rights. और बेशक में आते justice करने के right. जो जो ट्राइबल्स होते हैं वहां पर, उन पर एडजुडिकेट करना, उन पर फैसला सुनाना, दिस इज आल्सो द अथॉरिटी ऑफ द जागीरदार। एंड इन कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर द जागीर इज वेरी प्रिवेलेंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जागीरदार। And in Kashmir alone, मैं एक example, in 1872, when Dr. Ilmslai visited Kashmir, this Dr. Ilmslai, who came to Kashmir in 1872, says that I saw in Kashmir 45 jagirs. जागीर कश्मीर में। So this shows that there was a wide prevalence of jagirs and jagirdari system in Kashmir. This prevalence of jagirs and jagirdars in Kashmir itself shows that Dogra rule was feudal for a very long period of time. Not only this, you will see that in Kashmir, for a very long time, the revenue was collected in kind. Feudalism में एक फीचर देखोगे आप, in feudalism, the metal money is least in circulation. Metal money को पांच काम चलना है। आज जो लेन देन ज्यादा सब काइंडस में, काइंडस में वो खुराक में। I am saying one of the most important features of feudalism, that is least circulation of metal economy or metal currency. बल्कि currency शासन है क्या? Grains. Currency grains, लेन देन जो है वो grains में होता है feudalism में। और कश्मीर में देखोगे आप, for a very long time, till the end of the 19th century, most of the transactions were taking place in kind. Transactions are कसं नहीं होती, kind of समझ। आप एक चीज देते हो तो वो दूसरा चीज देते हो। Like I will quote example, Dogra rulers for most part of 19th century took land revenue in kind. नहीं, जो जमीन पर टैक्स लगता था, वो टैक्स जो है वो पैसे लेकर नहीं हासिल करते थे, बल्कि उसी में से जो आप कल्टीवेट करते हो, शरी राइस कल्टीवेट करते हो, राइस का आधा हिस्सा आपको देना पड़ता, बस दाने ही नहीं, not the money. So example, actually the grains were more valued than the money. Secondly, अगर आप this देखोगे
you gave to the state. Then the remaining part जो आपके पास है, if anyone is willing to sell it, अगर कच्चा राइस कानून है, the state had the monopoly over the rice. Status was monopoly right of rice. No peasant can sell the rice except to the state. The state used to purchase all sort of rice. So state prefer क्या है, stimuli. And then the state used to supply to its workers. The state पर workers, artisans, जो सिल्क फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, they were given rice as wages. Even a stimuli one दिन as wage. चाहवंत के मनी और से ज्यादा सर्कुलेशन है किया, जो स्टेट के एम्प्लॉयज जो स्टेट के लिए काम कर रहे थे, खासकर आर्टिजन, उनको भी ग्रेन्स में ही पे कर रहे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब वाल्टर लॉरेंस आते हैं कश्मीर, वाल्टर लॉरेंस आपने नाम सुना होगा, he was sent as a settlement officer to Jammu and Kashmir. सेटलमेंट ऑफिसर मींस कि उसको लैंड असेसमेंट करनी थी, उसको फिक्स करनी थी लैंड बाउंड्रीज, इसकी जमीन कितनी है। So when he was sent as settlement officer, even he was offered mustard seeds as salary. एमिसा वन्ने चासक पोहोयस तनखा बदल दिमोस तेलुगु गुल्ले mustard seeds. So ये भी दिखाता है कि not money is not much in circulation, and the people are valuing grains more than the money. तो पैसों का क्या करेंगे वो? शायद पैसे वो खा नहीं सकते, but grains they will eat and they will save themselves. तो शाहवंत कैसे हम फेडरलिज्म या फेडरल कह सकते हैं डोगरा रूल को। एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूड इन कश्मीर। ये सिस्टम, ये जागीरदाराना सिस्टम, ये लैंडलॉर्ड सिस्टम को कंटिन्यू, क्योंकि मैं कहूंगा आपको कि जब लॉरेंस विजिट करता है कश्मीर एंड इसके बाद वो एक सेटलमेंट करता है यहाँ पर, it is afterwards that in 1895 that Lawrence through his settlement career, he proposed that land revenue should be collected both in kind and cash. और को तेम propose है तो इतने से काम land revenue से collect करन छू, करीब हना करे तो kindness मस हना करे cash मस collect। और इतना ही नहीं, it was Lawrence's settlement that recommended that those who are cultivating the land cultivators में urge जितना interest, and लोगों को even जितना cultivate करें, ये बाबू को इनके साथ बेदखल करें। It was Lawrence who proposed that these cultivators should be given the occupancy right, even these occupancy right, feudalism feature। जब आप कल्टिवेटर को थ्रो आउट कर सकते हो अपनी मर्जी से। It was Lawrence in 1895 who proposed that the cultivators should be given the occupancy right. Occupancy right मतलब वो even देव इस हक जमीन पर काम करने और वहां से बेदखली नामुमकिन बनाओ, उसी को occupancy right. इनके साथ continuously land cultivate करेंगे and they will not be evicted from the land. इनको जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। और ये दिखाता है आपको कि लॉरेंस से पहले शायद ऐसा होता था कि अगर यहोश कल्टिवेट कर रहे हैं जमीन, अगले साल अगर आपको मालिक जो है वो जमीन का मालिक वो उसको बराबरी नहीं है आपके साथ, उसको मतलब आपके साथ जो है गुड विद यू, यू कैन थ्रो इट आउट, यू कैन बी इविक्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पर लॉरेंस
should be cultivating this land for all times till he is willing to do. और ये नहीं था कि आप लॉरेंस से सब चीजें खत्म हो गई. We see this जागीरदारी system, this landlordism was so much entrenched, यानी ये उतना घुस्योमुक्त, इतना deeply rooted था in the economic structure of Jammu and Kashmir that when Sheikh Mohammed Abdullah launched a movement against the Dogras, then in 1944, ये कौन खत्म नहीं है जागीरदार सिस्टम ये क्या है? It was continued. In 20th century it continued. It was in 1944 Sheikh Mohammed Abdullah under the banner of National Conference ने एक resolution pass कर दिया, and that resolution was नया कश्मीर manifesto, New Kashmir resolution, नया कश्मीर का ख्वाब. और atmas of decide करने के सकरो abolish landlordism. निशाओं तो landlordism से intact. ये दिखाता है आपको landlordism था यहाँ पर. And now Sheikh Abdullah in 1994 and his national conference is resolving. हालांकि इनके पास power skills. ये बात जहन से निकालो कि power में कितना. They were not in power, but they resolved it. कि नहीं, when we will get the opportunity, we'll abolish this landlord. तो फिर आपको पता है 1947 में Sheikh Abdullah became the emergency head. And in 1950, he got passed what is called as Abolition of Big Landed Estates Act. I will repeat. In 1950, he got passed a very famous act called as Abolition of Big Landed Estates Act of October 1950. It is called as Magna Carta. Magna Carta is big revolution. And this act fixed, or it put ceilings, and through ceiling will go limit fixed. It put ceilings on the maximum amount of land which can be held by a जागीरदार. शाहों तो जागीरदार सिस्टमों से तो मौजूद और इनको बस ये एक्ट से खत्म. और इस एक्ट में भी देखो क्या किया गया. The maximum limit is on fix of government. जो आप जागीरदार जमीन है खाई, it is 182 canals of land. अखा 200 canal of land. वो अभी मतलब वो कि अखा 200 canal आई मन था उन्हें तो एक इशू तो राइट. मगर 182 canal से ऊपर जमीन जो होगी, the land which you are in possession of above 182 canals of land, that will be taken over. और you will be expropriated from this land. तो you land बेदखल कर और तो ये land छीन और इसे बाकी जमीन जो कौन अखबाइश कनाल वर that will be transferred to those people who will be in cultivation of this land. यम लक्ष्य cultivate करने का सी तुमने ये land बाकी transfer कर. एक से ये जो रिलीफ था कश्मीरी पेजेंट्री के लिए कि लॉरेंस ने इनको सिर्फ ऑक्यूपेंसी राइट दे दिया. मतलब में ऑक्यूपेंसी राइट तो केवल जमीन बेदखल का और असली प्रॉपर्टी शिपर्स हेमसिडिशन लैंडलॉर्डशिप. मगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये एक्ट पास करके क्या किया, प्रॉपर्टी और शिप जितना सही ट्रांसफर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू द कल्टिवेटर over the land which he was holding over and above 182 canal. कौन से तरह एक्शन जो था पढ़ के मगर बोल के 1950 और से गासुन के पर 1950 में रेफरेंस है मौजूद कि ये was fully जागीरदाराना सिस्टम.
और इस जागीरदाराना सिस्टम को फिर खत्म किया शेख अब्दुल्ला ने, जो ये दिखाता है कि फिडल, ये जो डोगरा स्टेट था वो लार्जली एक फिडल स्टेट भी था, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम जो था वो कंटिन्यू था टिल द एंड ऑफ द डोगरा पीरियड. This was all about this how Dogra rule can be called as a feudal rule.